Hello and welcome to my YouTube channel BrainBridge. I am Vaibhav Kulshrestha and this is answer writing program, another series of AWP. This series belongs to Indian Economy GS paper 3. In this question we will cover answer format and model answer of Indian economy. First we will try to cover those questions which were asked in 2023. It means last one or the latest one. So first question of this series of this video is: faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSME. Comment on the present politics of the government in this regard 2023. क्वेश्चन में ये आया हुआ है 2023 में. सो एज लाइक ज्योग्राफी सीरीज यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप होगा आंसर फॉर्मेट. सो फर्स्ट थिंग इज आंसर फॉर्मेट, एंड in this answer format there are three steps. First is introduction, then in main body, and then conclusion. Now come to the question and just try to think about what could be the theme of this question. First is fast question again हम एक बार पढ़ते हैं. Faster economic growth require increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly MSME. Comment on the present policies of the government in this regard. It means ये क्या कह रहा है? It is asking about that for faster economic growth, what thing is necessary? The MSME sector, manufacturing sector, especially MSMEs, role should be greater or it should be increased in GDP. ये होना चाहिए. So हमें इसके बारे में बताना है. And present policy of the government of India regarding MSME sector, कैसे हम इसको बूस्ट करना चाहते हैं. So वो पॉलिसीज पूछी हुई हैं. That's it. So in this question, first we will tell about the government sector or MSME sector, because MSME is the theme. So MSME को थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे, देन और यहाँ पर हम थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे विद जीडीपी. व्हाट इज द रोल ऑफ एमएसएमई इन आवर जीडीपी. अगर आप प्रेजेंट डेटा दे सकते हो करंट का तो वो भी ठीक है. देन इन मेन पार्ट देयर वुड बी और इन मेन बॉडी देयर वुड बी टू पार्ट्स. In first part, we will explain how this manufacturing or especially MSME sector is important for GDP. इसका रोल कैसे बड़ा होना चाहिए. Then what are the government policies जो इसको बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है. Then in conclusion थोड़ा हम करंट अफेयर्स और पॉजिटिव एंड की तरफ उसको डाइवर्ट कर देंगे. So first is introduction. Government of India has recognized the critical role of manufacturing sector, particularly micro, small and medium enterprises (MSMEs), in driving faster economic growth, and there are various or several policies and initiatives have been introduced to bolster the manufacturing sector and enhance the contribution of MSME to GDP. So this is the introduction part. Now come to the main body part, and in main body first part would be about current policies. So Make in India policy, which was launched in 2014. In this initiative there was aim to transform India into a global manufacturing hub by encouraging both domestic and foreign companies to manufacture their products in India. It focuses on improving infrastructure, simplifying regulation and fostering innovation. So Make in India से हम क्या कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं. Second thing, second policy about आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन. आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट, हमें बाहर से किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है. So introduced this campaign was introduced during COVID-19 pandemic. This initiative emphasizes self-reliance and resilience in manufacturing.
It includes significant financial packages and reforms aimed at strengthening MSMEs, enhancing infrastructure, and simplifying regulation. Third scheme is about production linked incentive scheme. This PLI scheme offers financial incentives to various companies of this sector, including electronics, pharmaceuticals, automobiles, to boost domestic manufacturing को बढ़ावा देना है, and attract investment, because capital is important. Capital is must for any production. So this scheme is particularly beneficial for MSMEs looking to scale up their operation, जो अपना स्केल थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज MSME डेवलपमेंट एक्ट. तो MSME एक्ट 2006 aims to facilitate the promotion and development of MSMEs. Recent amendments have expanded the definition of MSMEs, allowing more enterprises to benefit from government schemes and incentives. That's it. In fifth, credit support scheme. There are two credit support schemes. First is Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises. This scheme provides credit guarantees to banks and financial institutions for loans extended to MSMEs, reducing the risk and encouraging lending. वैसे भी आपको पता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आता है PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. इट मींस जितना लोन देना है बैंक को 40% ऑफ दैट फंड वुड बी रिजर्व फॉर प्रायोरिटी सेक्टर. MSME प्रायोरिटी सेक्टर में आता है. सेकेंड इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. इट ऑफर्स कोलेट्रल फ्री लोन्स विदाउट एनी गिरवी, कोई भी डॉक्यूमेंट गिरवी रखे बिना, कितना अप टू 10 लाख रुपीज टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, fostering entrepreneurship and business expansion. So Pradhan Mantri Mudra Yojana, Credit Guarantee Fund, Trust for Micro and Small Enterprises. These are credit support schemes. Next is digitalization and ease of doing business. Government has implemented various measures to simplify regulatory compliance for easing the doing business. और इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड है? उद्यम रजिस्ट्रेशन. अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन अ सिंप्लीफाइड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर MSMEs, प्रोवाइडिंग इजियर एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स. सेकेंड, GEM मींस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. आपको अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना है, देन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट encouraging MSMEs to participate in government tender. सॉरी, स्पेशली टेंडर्स के लिए है. ठीक है, गवर्नमेंट टेंडर दे रही है तो MSME उस पे टेंडर को अप्लाई कर सकती है, फाइल कर सकती है. नेक्स्ट, अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लाइक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, फोस्टरिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस वे बना है वो कई सारे ऐसी जेट से होके जा रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और वहां पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन और MSMEs को भी कनेक्ट कर रहा है. स्मार्ट सिटी मिशन promotes the development of smart cities which provide modern infrastructure and services which benefit MSMEs. Next is skill development initiative, और उसमें आते हैं दो स्कीम, स्किल इंडिया मिशन एंड समर्थ scheme for capacity building in textile sector. So Skill India mission focuses on training and skill development to create a skilled workforce essential for the manufacturing sector. Samarth, it aims to provide skill development training to boost the textile industry, a significant segment of MSME. तो ये टेक्सटाइल के लिए है, वहां पर ऊपर स्किल डेवलपमेंट हो रहा है. नेक्स्ट, about cluster development program, a scheme for fund for regeneration of traditional industries. स्फूर्ति इसका नाम है, स्फूर्ति. तो ये फंड यहां पर किया हुआ है for traditional industries. It support the development of traditional industries and clusters
जो ट्राइब्स के हैं और अलग अलग रीजन में हैं, उन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए फंड है. Another is Micro and Small Enterprises Cluster Development Program. It aims to enhance the productivity and competitiveness of MSMEs through cluster development. So this is another program or scheme. Now these are the 9 schemes which are running currently by present government. Now what is the impact and future direction? It means we will shift toward conclusion. हम वहां पर कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी कंक्लूजन की तरफ आएंगे नहीं. हम ये बात कर रहे हैं कि जो एमएसएमई, जो अभी हमने यहां पर पॉलिसीज देखी हैं, ये 9 पॉलिसीज, उनका क्या इंपैक्ट होगा और किस डायरेक्शन में आगे काम होगा. सो दीज पॉलिसीज हैव हैड अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एमएसएमईज, लीडिंग टू इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड जॉब क्रिएशन. However, there are a few challenges also. Now, what are the challenges? First is ensuring the effective implementation of policies at the grassroots level. This is the main problem in India. Policies बहुत अच्छी बन जाती हैं, कायदे कानून सब बन जाते हैं, but effective implementation नहीं हो पाता. So, effective implementation तो हर जगह common मिल जाएगा. Second, addressing issues related to access to finance, particularly for smaller enterprises. Third, improving infrastructure further to match the scale of industrial growth envisioned. These are the challenges. Okay. Now, what should be the recommendation for counterbalancing these challenges or improvement of this sector? So, first recommendation is about strengthening financial support. इनको capital की need है तो capital provide कराओ. Enhance the reach and effectiveness of credit support schemes so that these MSMEs, especially micro and small enterprises, have better access to finance. Second, improving infrastructure. Accelerate infrastructure development projects, particularly in less developed region, to create a more balanced industrial growth so that MSME की एक help हो सके. Third, enhancing skill development for skilled labor force. स्किल डेवलपमेंट स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, तो उससे क्या होगा? इट विल क्रिएट अ वर्कफोर्स दैट कैन मीट द evolving needs of the manufacturing sector. Next thing, promoting innovation. New innovations should be added. Provide more support for research and development activities within MSMEs to foster innovation and technology adoption. Fifth one is boosting market access. प्रोडक्ट बन गया है, मार्केट में सेल होना चाहिए, सो फैसिलिटेट बेटर मार्केट एक्सेस फॉर एमएसएमईज थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स. सिक्स्थ वन इज स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेशन. फर्दर सिंप्लीफाइंग रेगुलेटरी प्रोसीजर्स टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन एमएसएमई. दिस इज अबाउट स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेशन सो दैट थोड़ा एमएसएमई को राहत भी मिले. एंड इन दी एंड कंक्लूजन. तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया. इन फर्स्ट पार्ट, इन इंट्रोडक्शन, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अबाउट एमएसएमई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई, सो उसके बारे में लिखा. देन इन मेन बॉडी पार्ट, वी फर्स्ट राइट अबाउट करंट पॉलिसीज, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट शुड बी द रिकमेंडेशन सो दैट वी कैन काउंटर बैलेंस दीज चैलेंजेस. तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर मेन बॉडी हो गया. इट मींस डिजायर्ड पार्ट इज आंसर्ड. नाउ इन कंक्लूजन, by addressing these areas, government can significantly enhance the contribution of manufacturing sector and MSMEs to GDP, leading to faster and more sustainable economic growth. That's it. So this is the model answer of this question. So that is all for today's lesson. If you have any question or comment, leave them down below. Make sure to subscribe my channel BrainBridge, Unlocking Potential, Igniting Success, for more great educational content. See you next time. Thank you.